वेलकम बैक सर। लेकिन मैं जिस चीज़ पर सोच रहा था कि ये जो तालिबान है, लेट्स नॉट से अफगानिस्तान और पाकिस्तान तालिबान, लेट्स रिफर टू देम एज तालिबान, ठीक है। अच्छा, जो अफगानिस्तान में जो तालिबान जो अटैक कर रही है, उनकी सेंचुरीज पाकिस्तान में है, ठीक है, एंड टीटीपी एक्सेट्रा उनकी सेंचुरीज अफगानिस्तान में, वो वहीं भाग जाते हैं ना। अब होता ये है कि यहाँ हम लोग कहते हैं कि जी ये तो गुड तालिबान है, ये हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहे, लेकिन ये वहाँ पे कर रहे हैं। वहाँ पे भी तो यही होगा कि ये भी गुड तालिबान है, उनके लिए ये अफगानिस्तान में नहीं अटैक कर रहे, ये पाकिस्तान में कर रहे हैं। एंड तालिबान इटसेल्फ इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, दोनों जगहों पे अटैक कर रहे हैं। नहीं, दोनों देखें, जहाँ तक नाउ वी अगेन अफ़गानिस्तान की सिचुएशन, एक सिचुएशन डेवलप हो रही है। देखो, दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। 2014 में कोलिशन फोर्सेस आर गोइंग, राइट? What do we see in 2014 in Afghanistan? I see three possible scenarios. Okay. Number one, either if the coalition forces leave lock, stock and barrel, either we revert to 1989. Warlords fighting, all of them fighting among themselves and ravaging Afghanistan. Hell broke loose again. Number two, if this is not the case, Taliban versus Northern Alliance, 1996. With Taliban on one side, Northern Alliance of minorities, Uzbek, Tajik, Hazaras on the other side. This is the second scenario. However, if the coalition forces leave a force here, which is quite likely, they are going to leave about 70,000 troops, which I presume is going to be air, helicopter gunships, special forces. They'll leave and they are going to raise Afghan National Army कोई 3.5 लाख 350,000 they intend raising by 2014. Is that possible? Do you think from your experience is that possible? The raising of that? No. Yes, very much. They are doing that. They have already reached, I think, 250,000 or something. They will do it. They are recruiting and they want to raise it to 350,000 and leave support. वो जो कहते हैं ना military term होती है, backup support on call air, helicopter gunship, special forces. Then the situation will be यही जो अभी है वही तालिबान versus government, and the government unfortunately is non-Pakhtun. It is dominated by minority, especially Panchiris. तो वो वही रहेगी और यही situation रहेगी. Now मैं और भी बताऊँ आपको कि यहाँ there is an India factor involved. Russia, Afghanistan में, Russia and India are supportive of the Northern Alliance people. They have always been. Now पाकिस्तान क्या करे इस सिचुएशन में? सोचें, हमने तो अपने आप को बचाना है, रेफ्यूजीज फिर चले आ रहे हैं इधर और ये आना जाना लगा है. Now who should we deal with? Who should we support? India is trying to create anti-Pakistan Afghanistan. This is nothing new. This phenomenon is since the 1950s and 60s, where Soviet Union and India and Afghanistan colluded to disturb Baluchistan and Greater Baluchistan, Pakhtunistan is all since the 50s and 16s. The same game is again starting, and so therefore we have to fend for ourselves. Now हम किस तरीके से, we cannot have an anti-Pakistan Afghanistan. So what does Pakistan do to make sure that हमारे interests are guarded? अफगानिस्तान अपना चलाएं जो कर, लेकिन हमें डिस्टर्ब, अगर फॉरेन पावर्स आते हैं लाइक इंडिया to disturb Afghanistan against us, we will have to take some action. So there is a likelihood of a proxy war going on in Afghanistan. This is a possibility. So therefore this whole Taliban issue is very, very complex. The other part that you are now talking of TTP going there. Now as I said, TTP has no business to go across to hide. As it is, they are terrorists because they are carrying out terrorism in Pakistan. Simple as that. So therefore we have to check them and we have to counter them, and that is only by force and by political means अगर वो कुछ समझ लें. Otherwise so there is no negotiation as far as TTP is concerned. Absolutely, anyone carrying out terrorism in Pakistan, no negotiation. So my point is that in Afghanistan terrorism is being carried out by Taliban also. Agreed. Right. So don't you think that they are also right that no negotiations should take place with the terrorists that are attacking Afghanistan? Okay, fine. It is the issue is, देखें, we are not, have we, आप ये मुझे बताएं,
there, as you say, the Taliban go across and they come across. क्या हमने ठेका लिया हुआ है उनको रोकने का? Isn't the ठेका also with Afghan forces and coalition forces? If we are responsible, 50% we are responsible, 50% they are responsible. Stop them. आप आना जाना खुद क्यों नहीं रोक लेते हो? हमें क्यों कह रहे हो? This border is a porous border. It's a mountainous border, and people come and go. There are easement rights there since the independence, where people have been traveling across without any visas. So therefore, they come and go. अब इसमें if we are responsible, equally coalition forces and Afghan National Army is responsible. So let's not blame Pakistan alone. We have to combine to stop interference. Exactly. आपके ज़माने में सर एक बात एक दफ़ा छिड़ी थी कि बॉर्डर को फेंस कर दिया जाए. एक दफ़ा ये चीज़ रेज हुई थी. Do you still believe that that's a solution to the problem? नहीं, बॉर्डर देखें, मिलिट्री में ऑब्स्टिकल, व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्स्टिकल, वो ऑब्स्टिकल बेकार होता है अगर मैन ना हो. इफ इट इज नॉट मैन, इंडिया ने बार्ब वायर फेंस लगाई हुई है फ्रॉम माधुपुर टू द डेजर्ट, 2000 मील लगाई हुई है. नहीं, दे डोंट, बिकॉज एवरी 200 yards देयर इज अ टावर and they have searchlights. Now can we do that all along? No, we cannot. We can only have selected barbed wire where we'll have to man it. Otherwise कोई भी वायर कटर एक प्लास्ट ऐसी चीज़ है, कट कर दो, आगे चले जाओ. What I had said was mine it, mining it. Now mining also in mountains is not easy, but mining can certainly put a blockade on. Yes, लेकिन उसकी मैं उसके बिल्कुल फेवर में हूँ. लेकिन ऑब्वियसली ये ईजमेंट राइट्स में प्रॉब्लम होंगी, आने जाने में जो लोग जेन्युइन लोग जो आना जाना वो भी बंद होगा. तो ये हमें एग्जामिन करना चाहिए. बिल्कुल, दैट इज वन वे. Now sir, moving a bit away from extremism, we'll come back to that. Mines don't have to be manned, by the way. Obviously. Mine उधर लगा हुआ और निशान लगा हुआ. I will like you to even take a step inside. वो तो deterrent itself है. Now moving away from a bit from the extremism scenario and coming to you. Now अगर हम 2007 का आपने जिक्र किया, 2007 में एक जो आपके दौरे हुकूमत में एक सिनारियो था कि जब पाकिस्तान में बाहर से कोई बंदा आता था या जनरली मुल्क में था, तो देयर वाज अ सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म. बहुत ये बात हो रही थी कि द कंट्री इज़ ऑन द वर्ज ऑफ टेक ऑफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अच्छा, अब तो ऐसा कोई ख्याल भी नहीं है. अब तो मतलब दीज डेज द एक्सटेंट ऑफ पेसिमिज्म इज़ ग्रोइंग डे बाय डे. ठीक है. Now, what I'm aiming at कि जहाँ पे लोग अब वो दिन याद कर रहे हैं, people do remember कि वो पिछला ज़माना अच्छा था. At the same time, they also blame you for this ज़माना. I mean, I know it's a no-win situation for you. कि whilst you're getting the credit, you're also getting the discredit for the current scenario. Because वो blame ये करते हैं कि जो एक पाकिस्तान में perception है कि you are the person who brought these people over. I mean, as you said, it's a no-win situation. Yeah, it's very easy to blame anyone. Absolutely. Blame, I am responsible for what I did in my 8-9 years, right? And certainly the government now is responsible for whatever they are doing now. वो ड्रोन अटैक्स मेरे पे कह देते हैं. मेरे ज़माने में तो 8 ड्रोन अटैक्स रिस्पॉन्सिबल. एनआरओ का ब्लेम तो आपके ऊपर आ. एनआरओ, यस, बट उसकी भी वजूहत, इट वॉज पॉलिटिशियंस हु एनकरेज मी टू डू दैट. हाउएवर, I do understand, I am a military man, that final decision is the leader's decision and he is responsible, whether good or bad, he is responsible. So where would you categorize that? Categorize? Good or bad? Yeah, bad. Yeah, I shouldn't have done it. I do agree that was a bad decision. It was a wrong decision, bad decision. But it had a background, it had a rationale. The rationale basically was कि वो cases जो हैं कोर्ट्स में हमारे चल रहे हैं. स्विस कोर्ट में द केस वाज गोइंग ऑन सिंस 12, मेरे से आने से पहले से चला रहा है, सिंस 12 years. आई इवन सेंट वर्ड देयर कि आपके कोर्ट तो हमारे जैसे ही हैं. फिर आई सेंट वर्ड टू द स्विस कोर्ट कि नो डिसीजन. सो आउट ऑफ द 11 केसेस दैट देयर वर ऑफ करप्शन एंड एवरीथिंग, आउट 8 में से तो बरी हो गए थे. The courts had done it. No case, no punishment, nothing. अब मैं तो नहीं कह रहा था कि केसेस बंद करो भाई, पनिशमेंट दो ना भाई. इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है.
नैब कोर्ट्स हैं, नहीं. नाउ दिस वाज द सिचुएशन इन द कोर्ट्स. So that is what actually I was against giving the cases, but when this argument came up and there was a reason कि जी conciliatory approach and all that करें, तो I had agreed, but I with hindsight I think because fallout बहुत negative हुआ, I shouldn't have done it. यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और फिर हम विल स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन फ्रॉम वेयर वी आर राइट नाउ. नाज़रीन, गुफ्तगू हम यहीं से शुरू करेंगे लेकिन एक छोटा सा ब्रेक.